Hello viewers, in this video we will discuss the law of demand. आमे एही वीडियो रे आमे चाहिदा नियम विषय रे आलोचना करिबा law of demand. We have already discussed the demand. So here in this video we will discuss law of demand. So demand, we know demand is a multi-valued function. Multi-valued function अर्थात चाहिदा बहु गुड़ी उपादान उपरे निर्भर करी थाए. In the last video we have already discussed it. So and this is shown in a demand function. Demand function means dx is a function of px, py, pz, t, g, n, etc. So this is a multi-valued function. That means the demand for good x depends on the price of good x, prices of related goods, taste and preference, government policy, population. So this is called demand function, and the demand for अर्थात x द्रव्यर चाहिदा बहुगुड़ी उपादान पर निर्भर करी थाए अर्थात एही याकू चाहिदा फलन बोली कहा जाए. एवं एही चाहिदा फलन रे आमे x द्रव्यर चाहिदा, x द्रव्यर दर, संपर्कित द्रव्यर दर, रुचि आग्रह, सरकार नीति और जनसंख्या एभली विभिन्न उपादान पर निर्भर करी थाए. एवं एही चाहिदा नियम रे आमे आमे दुईटी उपादान मध्य थिबा संपर्क को आलोचना करि थाउ. एंड इन द लॉ ऑफ डिमांड वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स. वन इज डिमांड एंड अदर इज प्राइस. एवं चाहिदा नियम रे आमे दुईटी उपादान मध्य थिबा संपर्क को आमे आलोचना करि थाउ. गोटे हला चाहिदा आ गोटे हला द्रव्यर दर. तेणु गोटे हला चाहिदा मीन्स डिमांड फॉर गुड एक्स, आ गोटे हला दर मीन्स px, प्राइस ऑफ गुड एक्स. px मीन्स प्राइस ऑफ गुड एक्स, bx मीन्स डिमांड फॉर गुड एक्स. तेणु अन्यान्य उपादान गुडी को एठारे स्थिर बोली निया जाए. अन्यान्य उपादान माने कोन सेडा? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन, वेदर कंडीशन एटसेट्रा. एही उपादान गुडी को आमे एठारे स्थिर बोली नै था. सो तेणु चाहिदा नियम रे द्रव्यर दर रे परिवर्तन हेले चाहिदा रे किभली परिवर्तन होई थाए सेही विषय आलोचना करा जाए. सो इन द लॉ ऑफ डिमांड वी विल डिस्कस हाउ द डिमांड रिएक्ट, हाउ द डिमांड फॉर गुड्स चेंजेस टू ए चेंज इन प्राइस. द्रव्यर दर रे परिवर्तन हेले चाहिदा रे किभली परिवर्तन होई थाए, चाहिदा रे की प्रभाव देखिबा को मिली थाए सेही विषय रे चाहिदा नियम रे आलोचना करा जाए. सो से अन्य उपादान गुड़ी को आम स्थिर बोली नहीं था. तेणु चाहिदा नियम तर स्टेटमेंट है चाहिदा नियम जहाँ को आम पूरण करवा समस्त नियम गोटे गोटे स्टेटमेंट रही है जहाँ को आम प्रमाणित करी नियम तार स्टेटमेंट है पिले कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. अर्थात अन्यान्य समस्त उपादान स्थिर थाई द्रव्यर दर रे वृद्धि हेले चाहिदा ह्रास पाए एवं द्रव्यर दर रे ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाए. अर्थात यहाँ को आम एभली लिखि पारिबा दुईटी मध्य संपर्क को आम लिखि पारिबा कार पिले गोटे हला dx आ गोटे हला px. एमानक मध्य संपर्क अछि. कोन संपर्क अछि? व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, दर जेतेबेले ह्रास पाउछि चाहिदा वृद्धि पाउछि. एंड व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग द डिमांड इज डिक्रीजिंग, दर ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाउछि, दर वृद्धि हेले चाहिदा ह्रास पाउछि. अर्थात that means when the price is decreasing demand increasing, when price is increasing demand decreasing. That means there is a opposite relationship between these two elements. Opposite relation, negative relation, negative, indirect. एमानक मध्यरे विपरीत संपर्क रही अछि, ऋणात्मक संपर्क रही अछि, अपरोक्ष संपर्क रही अछि. That means both the price and the demand moves in the opposite direction. द्रव्यर दर एवं चाहिदा विपरीत दिगरे गति करि थांती. तेणु एमानक मध्यरे आमे परोक्ष संपर्क को आमे विश्लेषण करि थाउ.
केउ नियम रे चाहिदा नियम रे एवं यहाकू सांकेतिक भाषा रे किभଳି लेखा जाए सांकेतिक भाषा रे याकू सिम्बॉलिकली मीन्स सांकेतिक भाषा रे हमको लिखि परिवा dx is inverse related to 1 by px एटा पिले inverse relation dx means demand of good x dx reflect demand for good x and this symbol indicate inverse relation inverse inverse relation inverse means विपरीत संपर्क and px means price of good x तेणु द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्य कौन संपर्क रही विपरीत संपर्क रही एवं यहाकू चाहिदा नियम रे आमे विश्लेषण करिथाउ एंड बिफोर वी एक्सप्लेन द लॉ फर्स्ट वी विल टेक द एजम्पशंस ऑफ द लॉ आमे नियम को आलोचना करिया पूर्व तार शर्तावली गुडी को आमे उल्लेख करिवा एजम्पशंस ऑफ द लॉ एजम्पशंस समस्त नियम रो केते गुडी शर्त रही थाए एवं एही नियम रो मध्य केते गुडी शर्त रही अछि एवरी लॉ इज बेस्ड ऑन certain assumptions and this law is also takes some assumptions and these assumptions are consumer is a rational consumer is a rational being consumer is a rational being human being taste and preference of the consumer constant prices of the related good remain constant population remaining constant remaining constant then distribution of income and wealth remain constant distribution of income and wealth remain constant climate and weather condition remain constant these are the assumptions of the law उपभोक्ता जड़े विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते कंज्यूमर इज रेशनल ह्यूमन बीइंग अर्थात से मुझे बुझे दूसरी तुमको लेट मी एक्सप्लेन इट सो rational consumer means the consumer should be purchasing more at a lower price and should be purchasing less at a higher price उपभोक्ता कम दाम रे जड़े विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति कम दाम रे अधिक किणुवा बेले अधिक दाम रे कम किणवा से चाहूबे ताको विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति बोली कहा जाए टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेनिंग कांस्टेंट तांकर रुचि और आग्रह स्थिर थिबो दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी चेंज इन द टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एवं तांकर रुचि और आग्रह रे कोनोसी परिवर्तन हेउ नथिबो से यदि बाजार को
ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ, ମାଂସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସେ ଆଣୁନଥିବେ, ତାଙ୍କର ରୁଚିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ। ସୋ ଦେୟାର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଦେନ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାଇସେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସ୍ଥିର ଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ when we are discussing about the demand of tea, then the prices of coffee should be constant. जदि आमे चा रो चाहिदा विषय आमे आलोचना करूची ताहेले सेही समय कॉफी तार संपर्कित द्रव्य रो दर स्थिर थिबो, सेथिरे कोनोसी परिवर्तन हेउ नथिबो, कारण तांको भितर संपर्क अछि आमे आगु आलोचना करिछि। देन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री should be or the population in the market should be constant. बजार रे जनसंख्या स्थिर थिबो। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड बी कांस्टेंट। आय एवं संपत्तिर बंटन रे परिवर्तन ले चाहिदा परिवर्तन हुए आम पढ़ीचे, तेणु एठारे आय एवं संपत्तिर बंटन रे जो अछि बंटन रे कोनोसी परिवर्तन हेउ नथिबो। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द distribution of income and wealth between the poor and the rich. The last one, climate and weather condition remain constant. जलवायु पाणीपाग रे कोनोसी परिवर्तन हेउ नथिबो, कारण एई सब उपादान रे परिवर्तन हेले चाहिदा रे परिवर्तन होइथाय, तेणु एही उपादान गुडी को एठारे स्थिर बोली निया जाय। याको मने किबो रखिया पिले आमे से डिमांड फंक्शन कथा तुमे मने पका। डिमांड फंक्शन रे मु लिखितिली डिमांड फॉर गुड एक्स is a function of price of x, price of related goods, taste and preference, population, government policy and weather condition। देखो एही दुईटा उपादान रे केवल परिवर्तन हेबो, गुटे हला चाहिदा x द्रव्यर चाहिदा आ गुटे हला x द्रव्यर दर। सो हियर we can remember this easily, you can see this, you can refer this. So here we will change two things, one is price of good x and other is demand for good x, and all other elements are remain constant। देखो एही अन्यान्य उपादान एठारे काहाको निया जाईछि आम से स्टेटमेंट रे। देखो अन्यान्य समस्त उपादान स्थिर थिबो। अन्यान्य समस्त उपादान मीन्स देखो उपभोक्ता जन विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होइथिबे, एटा गोटे खाली हमर खाली अलगा अछि। देखो नहले देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, रुचि और आग्रह स्थिर थिबो। देन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी कांस्टेंट, संपर्कित द्रव्यर दर स्थिर थिबो। जनसंख्या स्थिर थिबो। सरकारଙ୍କର नीति रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही, जलवायु रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। एठारे सब किछि सब लेखा हैनी, केते गुडी को नियाइछि। सो दीज आर द अदर एलिमेंट्स, अन्यान्य समस्त उपादान स्थिर थिबो। सो हियर तापरे आमे कोन कहूचे देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। एमानक मध्य रे विपरीत संपर्क रही अछि एवं एहा को आमे एक सारणी माध्यम रे एवं चित्र माध्यम रे आमे व्याख्या करि परिबा बा प्रदर्शित करि परिबा। And now this relationship between price and demand can be explained with the help of a table and diagram। आमे हाकु टेबल और डायग्राम माध्यम रे आमे हाकु आमे विश्लेषण करि परिबा। So first